Hello would be doctors, this is my part 4 of NEET Physics 2020 Physics in 8 hours. So in this part I will discuss rotational motion. Two questions definitely will be asked on 13 September 2020 on this rotational motion. Can be asked from moment of inertia, center of mass or from the remaining portion of the rotational motion. So first of all, in this rotational motion, center of mass, this is a mathematical problem. How you have to calculate the center of mass of a body? So simple, the formula for just to calculate the center of mass for a body, that is RCM vector is equal to M1 R1 vector plus M2 R2 vector divided by M1 plus M2. Here R1 and R2 are the positions of masses M1 and M2 from the origin. In this way, if suppose we are having n particles of masses M1, M2, M3 dash dash Mn, in that case their center of mass will be M1 R1 vector plus M2 R2 vector dash dash plus Mn vector whole divided by M1 plus M2 plus M3 dash dash plus Mn. So if suppose here the masses are equal, then the center of mass becomes R1 plus R2 plus R3 dash dash plus Rn divided by n. Means we have to calculate the mean of all these masses. We will be able to calculate the center of mass if the masses are all are having the equal masses. Clear? In case it is a three-dimensional body, in that case R1 will be equal to x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. Similarly R2, R3 dash dash Rn. In this case center of mass is having three coordinates. One is along x-axis, second is y-axis and third is along z-axis. The value of x will be summation of mi xi divided by summation of I is equal to 1 to n mi, and y is equal to summation of I is equal to 1 to n mi yi divided by summation of mi. Similarly z coordinate, in this way we can calculate x coordinate, y coordinate and z coordinate of the center of mass. Here if it is a two-dimensional body, then z will be 0, either y0 or x0. If it is a one-dimensional body, in that case y and z both 0 or x and y both 0 or y and z x and z both 0. So this is the way, this is the formula just to calculate the center of mass, position of the center of mass. Similarly, we can calculate velocity of the center of mass. If we know the velocity of each particle, then we can calculate velocity of the center of mass. In that case, velocity of the center of mass will be m1 v1 vector plus m2 v2 vector dash dash plus mn vn vector whole divided by m1 plus m2 dash dash plus mn, or summation of I is equal to 1 to n mi vi divided by summation of divided by total mass. And then acceleration vector, that is summation of m1 miai divided by summation of m, means sum of the products of their masses and acceleration divided by total mass, that will be the center of mass of the acceleration. So this is for the discrete bodies. If we are having continuous body का अपने center of mass निकालना है, x will be equal to integration of x dm divided by integration of dm. Similarly y coordinate, integration of y dm divided by summation of integration of dm. Z coordinate, integration of z dm divided by integration of dm. If it is a one-dimensional body, there will be only x coordinate or y coordinate or z coordinate. If it is a two-dimensional body, in that case it will be x and y both coordinate. Just remember, center of mass also hold the conservation of linear momentum. Means center of mass का जो center of mass का भी momentum जो है वो conserve रहेगा when no external force is acting. Clear? So after that, it can be asked, just remember there is very one important point. In case of there are two masses, if we are calculating the center of mass of the system of two particles, then position of the center of mass
is always very near to the heavier particle. हमेशा heavier particle के नजदीक center of mass lie करता है. Clear? Just remember, location of the center of mass is fixed, but position of the center of mass can be changed with respect to the change of the origin. Just remember कि center of a uniform rod always lies at the midpoint of the rod. Center of mass of all the circular bodies lies at their center. हमेशा उनके center के ऊपर lie करता है. Center of mass of a cubical block is lying at the point of intersection of the diagonals. Center of mass of cylinder is center of mass of the axis of cylinder. Center of mass of a solid cone is 3/4 of the height of the cone from the apex. Center of mass of a triangular lamina is the point of intersection of the medians. Just remember it. Clear? So this is about center of mass. Similarly, we have to calculate in case of rotational motion. Here mass is replaced by moment of inertia. It is defined as the sum of the products of the masses and square of the perpendicular distance from the axis of rotation. Moment of inertia I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square dash dash plus mn rn square. Here r1 r2 r3 dash dash rn, these are the perpendicular distances from the axis of rotation. Clear? Now moment of inertia, just remember कि moment of inertia of any body depends upon three factors. Very important multiple choice question. It is depending upon mass of the body, position of axis of rotation. Third, it is depending upon distribution of mass about the axis of rotation. Clear? So this is the moment of inertia for discrete body. For continuous body, it will be written as I is equal to integration of r square into dm. Clear? So just remember there is one term, radius of gyration, distance of a point from the axis of rotation at which if the whole mass of the body is supposed to be concentrated, its moment of inertia about the axis of rotation will be same as determined by the actual distribution of the mass is called radius of gyration. It is denoted by, इसको हम k के साथ denote करते हैं. In case of a body of equal masses, in that case radius of gyration is defined as the root mean square of perpendicular distances from the axis of rotation. Clear? So radius of gyration is having the dimension as that of dimension of length. Remember, radius of gyration of a circular ring is, that is capital R, of a circular disc is r by root 2, of solid sphere is root 2 by 5r, of hollow sphere is root 2 by 3r, solid cylinder is r by root 2, and of thin rod is, that is L by root 12. Just remember it. For the moment of inertia, we have defined two theorems. One is the theorem of perpendicular axis, another is the theorem of parallel axis. Theorem of perpendicular axis, the moment of inertia of a lamina. This theorem is valid for two-dimensional body. About an axis perpendicular to the plane is equal to the sum of the moment of inertia about any pair of mutually perpendicular axes in the one plane, provided the given axis passing through the same point of, or I is equal to Iz is equal to Ix, Iz is equal to Ix plus Iy. Ix and Iy are the moment of inertia along x-axis and y-axis. Then moment of inertia along z-axis will be Iz plus Iz is equal to Ix plus Iy. Another theorem is theorem of parallel axis. The moment of inertia about any axis is equal to the moment of inertia about a parallel axis through its center of gravity plus the product of its mass and square of the perpendicular distance of its center of gravity from the given axis. IAB, this is the parallel axis, this is equal to ICM plus MH square. Clear?
The moment of inertia, just remember, moment of inertia of a circular ring passing through center perpendicular to its axis किसके इक्वल होता है? That is equal to mr square. That is equal to mr square. And moment of inertia of the circular ring about its diameter axis. Diameter axis के along its moment of inertia is half mr square. Moment of inertia of the circular ring about an axis tangent to the ring and parallel to the diameter of the ring, that is equal to क्या होता है? 3/2 mr square. And moment of inertia of a circular ring about its tangent perpendicular to its plane, that is equal to क्या होता है? 2 mr square. Just remember the moment of inertia of a circular disc, that is half mr square about its symmetrical axis. Symmetrical axis means passing through its center perpendicular to its plane, that is half mr square. And about its diameter axis is 1/4 mr square. And tangent, that is parallel to the diameter axis, is 5/4 mr square. And tangent perpendicular to the plane is, that is 3/2 mr square. And remember, the moment of inertia along passing through the diameter axis always lesser than the moment of inertia of a center perpendicular to its plane, lesser than tangent in a plane, lesser than tangent perpendicular to the plane. This is very, very important. Remember it. All these 3 points means moment of inertia along passing through diameter axis lesser than a center perpendicular to its plane, lesser than tangent in a plane, lesser than tangent perpendicular to the plane. The moment of inertia of a thin uniform rod, that is thin uniform rod का जो moment of inertia, that is 1/12 ml square, where L is the length of the rod about an axis passing through its end perpendicular to its length, that is 1/3 ml square. Means this is the axis. इस axis के along moment of inertia कितना है? ml square by 3. इस axis के along क्या था? That is ml square by 12. The moment of inertia of a sphere about diameter axis. Diameter axis कह लो, about any symmetrical axis कह लो. Solid sphere का जो moment of inertia है, x axis के along, y axis के along, z axis के along, तीनों के along क्या है? Same है. What is that? 2/5 mr square. और solid sphere में चाहे tangent in a plane लो या tangent perpendicular to the plane लो, सबके along क्या है? Same है. और वो moment of inertia क्या बन जाता है? 7/5 mr square. Just remember it. So these are the, just remember all these values of the moment of inertia of a ring, disc, solid sphere, thin rod. इसी तरह moment of inertia of a hollow sphere क्या होता है? 2/3 mr square होता है. And moment of inertia of a solid cylinder about its own axis क्या होता है? Half mr square. Passing to its center perpendicular to its length क्या होता है? m into r square by 4 plus l square by 12 होता है. Clear? And just remember moment of inertia of a rectangular lamina, length of the lamina is L and its breadth is B. Along the length of the lamina क्या होता है? mb square by 3 होता है. Along breadth क्या होता है? That is ml square by 3 होता है. Center of the lamina parallel to its length क्या होता है? mb square by 12 और ml square by 12. Center of the lamina perpendicular to its plane क्या होता है? m into l square plus b square by 12. Clear? So just remember this table about this. ये सभी आपको moment of inertia क्या है पता होना चाहिए. Just remember moment of inertia of a right circular तो this is 3/5 m into r square by 4 plus h होता है. Just remember all these values. Now what is the torque? It is defined as the moment of force. It is measured as the product of the force and perpendicular to the distance from the axis of rotation. As in case of translational motion, you are having the force. That force produce the translational motion. This torque produce the rotational motion. और torque इसके बराबर है force into perpendicular distance. और torque vector is equal to r vector cross f vector. Direction of tau vector is perpendicular to the is along that axis which is
perpendicular to the plane in which r vector and f vector is existing. Clear? Now torque for if body is rotating in yz plane, torque will act along x axis. If it is in xz plane, then it is along y axis. If it is rotating in xy plane, then torque will be along z axis. So these are the value of torque along x axis, along y axis and along z axis. Clear? Now in terms of moment of inertia, this जैसे आपके पास F फिजिकल, यहाँ पे F इज रिप्लेस बाय टॉर्क, वहां पे F फिजिकल टू क्या होता है ma, यहाँ पे m इज रिप्लेस बाय I, a इज रिप्लेस बाय अल्फा, तो टॉ इज हियर I इनटू अल्फा के इक्वल होती है. टॉ इज इक्वल टू I इनटू अल्फा. नाउ एंगुलर मोमेंटम, it is defined as the moment of momentum. It is measured as the product of linear momentum and perpendicular distance from the axis of rotation. और इसी तरह वेक्टर फॉर्म में L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर होता है, और L इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम. P इज इक्वल टू क्या होता है, mv. here mv is replaced by I, v is replaced by omega. so angular momentum L is equal to क्या होता है, दैट इज इक्वल टू I into omega. जैसे वहां पे ट्रांसलेशनल मोशन में देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स. फोर्स क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सिमिलरली यहां पे टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. Here also defined law of conservation of angular momentum. When no external torque is acting, total angular momentum remains conserved. L is equal to constant, I omega is constant, I1 omega 1 is equal to क्या है, I2 omega 2 है. तो यहाँ पे बहुत सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, दे कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला I omega is equal to constant. और इसे हम I omega को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, दैट कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड बाय mv r is equal to constant. तो सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगी. This also result implies that omega is inversely proportional to I. As I increases, correspondingly angular velocity क्या करती है, decrease करती है. जितनी भी applications हैं, they are based upon this one. This is very important. If Earth suddenly shrinks 1/n times of its original radius, mass remains unchanged, then new time period of the Earth becomes 24 by n square. This is very very important formula for the multiple choice question. Here I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. I1 omega 1 is 2 pi by t. R2 will be here R1 by n. तो T2 जो आ जाएगा आपके पास, that becomes 24 by n square. If the radius of the Earth becomes 1 by n times of its present radius, then time period of the new Earth becomes 24 by n square. Clear? What is the now the question can be asked on कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में भी आ सकता है. कहता है if two disks of moment of inertia I1 and I2 about the rotating about their axis normal to the disk passing through the center, rotating with angular velocities omega 1 and omega 2 are brought into contact face to face with their axis of rotation coincident, the angular speed of the new system is. तो उस केस में नई एंगुलर स्पीड क्या बन जाएगी, I1 omega 1 प्लस I2 omega 2 डिवाइड बाय I1 प्लस I2. और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि इस केस में जब वो दोनों डिस्क ज्वाइन करेगी, व्हाट इज द लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. इन दिस केस loss in rotational kinetic energy will be I1 I2 omega 1 minus omega 2 whole square divided by twice of I1 plus I2 होगा. Just remember this is very very important. Just remember when a body is rolling, जब बॉडी रोल करती है तो रोलिंग के टाइम मींस रोलिंग किसे कहते हैं, जब बॉडी के पास ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों ही मोशन हो तो उस समय बॉडी को क्या कहते हैं कि इट इज रोलिंग. प्योर रोलिंग मींस देयर इज नो स्लिपरी, तो इन दैट केस द बॉडी इज सेड टू बी हैविंग प्योर रोटेशनल मोशन. when it is body is rolling, in that case it is having both translational
kinetic energy as well as rotational kinetic energy. So when body is rolling, total kinetic energy is half mv square plus I ओमेगा स्क्वायर होता है। ये देखिए, अगर ये बॉडी क्या है फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर आगे की तरफ जा रही है तो दिस इज ए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है तो दिस इज ए प्योर रोटेशनल मोशन। और जब ये दोनों मोशन कंबाइन हो रहे हैं तो आपके पास रिजल्टेंट मोशन क्या बन रहा है, ये रोलिंग मोशन बन रहा है। तो रोलिंग के केस में आई एम टेलिंग यू कि टोटल आपके पास एनर्जी जो होती है हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर होती है। रिमेंबर, इन केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हर पॉइंट के ऊपर सेंटर ऑफ मास, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या होती है, v होती है। और जब प्योर रोटेशनल मोशन होता है तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, r ओमेगा, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। और जब ये दोनों मोशन कंबाइन कर जाते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या बन जाती है, 2v बन जाती है, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 बन जाती है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है, v हो जाती है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ रिमेंबर कि जब आपके पास कोई बॉडी रोल कर रही है तो उस समय टोटल एनर्जी जो है हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है। रिमेंबर कि व्हेन ए बॉडी इज रोलिंग उस समय फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मींस टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू क्या होती है, 1/1 plus k square by r square होती है। Very very important for ring, this is value is 1/2 means when ring is rolling 50% translational kinetic energy है, 50% rotational kinetic energy है। For disk it is 2/3 means 66% translational है, 33% क्या है, rotational है। For solid it is 5/7 means 72% translational kinetic energy है और 28% क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। When body is rolling, the ratio of rotational kinetic energy and total kinetic energy वो क्या होती है, 1/1 plus r square by k square है। For ring this is 1/2, for disk this is 1/3 and for solid sphere it is 2/7 होती है। Just remember there is a relation between rotational kinetic energy and moment of inertia। जैसे वहां पे translational kinetic energy और momentum में क्या रिलेशन है, that is p square by 2m है। तो rotational kinetic energy और angular momentum में क्या रिलेशन है, that is equal to l square by 2i होती है। Remember this is very very important formula कि when a body is rolling down over a rough inclined surface whose angle of inclination is theta, उस समय जो इसकी acceleration होती है that is g sin theta upon 1 plus k square by r square होती है। This is very very important formula। For ring ये acceleration g sin theta by 2 बन जाती है। For disk it becomes 2/3 g sin theta। For solid sphere this acceleration becomes 5/7 g sin theta बन जाती है। And remember acceleration of solid sphere greater than acceleration of disk होती है, greater than acceleration of ring होती है। अगर ये तीनों बॉडीज ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोल कर रही है तो रेशियोज ऑफ देयर टाइम टेकन टू रीच द बॉटम ऑफ दिस बॉडीज क्या होती है, √7/5 is to √3/2 is to √2 होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्लियर? नाउ अगर कोई बॉडी क्या है, ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर कोई बॉडी रोल करती हुई रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ग्राउंड के ऊपर पहुंचती है तब उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, √2gh/1 plus k square by r square होती है। और स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्लाइड करते हुए नीचे जाती है तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, √2gh होती है। और अगर रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बॉडी क्या है, स्लाइड करती हुई जा रही है तब वो बॉटम के ऊपर जब पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, √hg into sin theta minus mu cos theta होती है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नाउ
एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दिया, रोलिंग के टाइम g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर है। रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्लाइड करती हुई जा रही है, g sin थीटा। फ्रीली फॉलिंग की बॉडी क्या है, g है, और रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्लाइड कर रही हो जाती है, तब एक्सेलरेशन क्या होती है इसकी, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होती है। रिमेंबर इट, क्लियर। टाइम टेकन तीनों केसेस में क्या होते हैं, अंडर रूट ऑफ 2g sin थीटा s अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर है, और स्लाइडिंग के केस में 1 बाय sin थीटा अंडर रूट ऑफ 2h बाय g है, और फ्रीली फॉलिंग के केस में अंडर रूट ऑफ 2h बाय g है, और रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्या है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा होगा। इससे फिर हम वी कैन कैलकुलेट द रेशियो द टाइम टेकन टू रीच द बॉटम ऑफ द सेम इंक्लाइन प्लेन बाय रोलिंग एंड देन स्लाइडिंग, क्या आ जाती है, दिस इज tr by ts अंडर रूट ऑफ 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। tr इज टाइम फॉर रोलिंग, ts इज द टाइम फॉर स्लाइडिंग। क्लियर। नेक्स्ट यही रेशियो क्या है, रिंग के लिए क्या हो जाती है, √2 हो जाती है, डिस्क के लिए √2/3 हो जाती है, और सॉलिड स्फीयर के लिए इट बिकम्स अंडर रूट ऑफ 5/7 बन जाती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके पास इस तरह से क्या है, इसके ऊपर एक डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ ही जाता है। देयर इज ए वन कंडीशन कि अगर कोई बॉडी किसी रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोल करती हुई फॉल करती है, तो उस केस में जो है उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, रफ इंक्लाइन प्लेन का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर होना चाहिए। The value of coefficient of static friction should be greater than or equal to tan theta upon 1 plus k square by r square। तभी बॉडी क्या है, उस रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर नीचे रोल करते हुए फॉल कर सकती है, अदरवाइज वो बॉडी क्या है, रोल करते हुए फॉल करेगी नहीं। ये दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक रोप फाउंड है, उसके साथ एक एंड के ऊपर आपके पास कोई मास अटैच्ड है, तो आप जब वो मास नीचे फॉल करेगा तो कितनी एक्सेलरेशन के साथ ये मास नीचे फॉल करेगा, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, g अपॉन 1 प्लस I अपॉन mr स्क्वायर है। I क्या है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर है। I क्या है, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सिलेंडर जिसके ऊपर रोप वाउंड हुई है। सो थैंक यू वेरी मच वुड बी डॉक्टर्स। तो ये जो मैंने आपके पास इस पार्ट में, फोर्थ पार्ट में आपके साथ मैंने रोटेशनल मोशन डिस्कस किया है, इसमें 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ ग्रेविटेशन और थर्मोडायनेमिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।